पेस्ट्री एक ऐसी स्वीट डिश जिसਨੂੰ हर कोई पसंद करता है। क्रीमी, चॉकलेटी ते अपनी सॉफ्टनेस की वजह नाल ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਟੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਜੋ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਐਲਐਨ ਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਟੇਸਟਫੁਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, पेस्ट्री क्वीन इंडिया। ते आओ फिर लैके चलते हैं तुहानू इस टेस्टफुल कंपीटिशन दे विच ते मिलवाने हां इस कंपीटिशन दे कंटेस्टेंट्स दे नाल। We actually had to present 5 altogether, 4 desserts as well as 1 sugar pastry, sugar display. The theme was astrology. The competition was actually for 2 days. You have to finish everything in 2 days. So my theme is basically based on astrology, obviously, but it's more of a medieval time representation. एस्ट्रोलॉजी का नाम के हिसाब से एक्वेरियस चुना has my theme. So whatever I have done is according to Aquarius and their flavors. So Aquarius का फेवरेट फ्लावर लैवेंडर है, तो उसके हिसाब से मैंने पेस्ट्री फिंगर पेस्ट्रीज़ में लैवेंडर का फ्लेवर दिया। एंड देन दे लाइक फ्रूट्स, सो इधर स्ट्रॉबेरी है, उधर बनाना एंड पैशन है, तो उसके हिसाब से। So my theme is Scorpio, and Scorpio, like I told you, is an astrological sign. In this we had to make 4 desserts: a chocolate cake, a glass dessert, a tart, and a mini pastry fingering. And all of my desserts depict the sign of a Scorpio. I'm showing that a baby's destiny is decided at the time that he or she is born, but we chefs, we don't believe in that. We create our own destiny. So that's how I've shown the baby, the sun, and then a Virgo. So I am a Virgo, so I've shown that as a lady. Then apart from that, I had done a fingering dessert which was based on Mars. I had done a shooting star tart. I had done a lunar eclipse glass dessert. And I had done a solar system cake. ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੈਸਟ 5 ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੱਜਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸਟਰੀਜ਼। ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪੇਸਟਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੇਸਟ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੇਸਟਰੀ ਕੁਈਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਜ। हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम है बेकरी रिव्यू, जो प्रोफेशनल पेस्ट्री फ्रेटर्निटी के लोग, बेकर्स, चॉकलेटियर्स पढ़ते हैं। हमारा ये प्रयास था कि कुछ लड़कियां जो पेस्ट्री इंडस्ट्री में काम करती हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स में काम करती हैं, उनको थोड़ा सा सम्मान मिले और वो अपने स्किल्स, उनके इतने अच्छे सुंदर स्किल्स होते हैं जो एक होटल तक ही सीमित रह जाते हैं, मगर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे देश का नाम रोशन हो और वो हमारे इंडिया को इंटरनेशनल ऑडियंस में जाके ये चीज़ को देखें, क्योंकि इंटरनेशनली लोग हमें समझते हैं कि इंडिया डेजर्ट का नाम है जलेबी, गुलाब जामुन। तो हमारा आइडिया सिर्फ इतना है कि इसमें हम देश
को आगे लेके जाएं और हमारे पास क्या स्किल्स हैं वो इंटरनेशनल ऑडियंस को बताएं। आज का जो थीम है पेस्ट्री क्वीन कंपटीशन वो एस्ट्रोलॉजी है। सो हम देखना चाहते हैं कि वो थीम के साथ सब जो आइटम्स है वो थीम के साथ कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, एंड एट द सेम टाइम द टाइम, टेम्परेचर एंड टेस्ट एंड टेक्सचर, एंड मेन क्राइटेरिया जो है वो है आर्टिस्टिक स्किल्स के ऊपर है, क्रिएटिविटी एंड व्हाट दे कैन पुट फॉरवर्ड। पेस्ट्री ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਿਲਡ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਸਟ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਦਿਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਫਿਨਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਧੋਂ ਮੇਂ ਕਾਨਾ ਰਾਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਜੱਜ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। Well, when we look at pastry section which the contestants are competing in, I mean criteria within the pastry, it takes you to so many things, yeah, textures, colors, they have to be alive, taste, that is very important. Say let's say for instance they're doing a sugar showpiece, so the shine of the sugar, yeah, and how many techniques they put into one thing, okay? It should not be overdoing, okay, because sometimes the less the merrier, but yeah, I mean in one thing has to be more than one technique and more than one texture. 2 साल पहले हमने फीमेल पेस्ट्री का ये जो कंपटीशन है करवाया था, पहले इंडिया में सबसे पहली बार हुआ था। तो हमें लगा कि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे फीमेल पेस्ट्री शेफ्स हैं, क्यों ना हम उनको एक मौका दें, एक प्लेटफॉर्म दें कि वो आएँ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अपना स्किल शो करें और जो सबसे अच्छे हैं उनको हम फर्दर ग्रूम अप करके फर्दर ट्रेन करके उनको इटली लेकर जाएं, जहाँ पर वो दुनिया के जो सबसे अच्छे पेस्ट्री शेफ्स हैं, फीमेल पेस्ट्री शेफ्स हैं, उनके सामने कम्पीट करें। रिज़ल्ट जो भी आएगा लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलती सबके लिए। We will be here with a quick networking break and a performance by our beautiful artist from Ukraine, Katrina. So, till then, you all keep enjoying this beautiful evening, the Pastry Queen India 2017. We are now moving on to our category awards. The 4 awards that we have, which are the Best Dessert in Glass,
the best dessert based on tart, the best chocolate cake, that is the sugar display, and the best mini pastry finger ring. Can I call on stage our prestigious guest, Miss Raji M. Shinde of PTC on stage with a huge round of applause. Come on everyone, please put your hands together. We are delighted to have our special guest, Miss M. Shinde, who is a Dada Saheb Phalke Film Foundation awardee for the Women Entrepreneur of the Year for TV and Films 2016. Ms. M. Shinde, the CEO and Director, PTC Network, is a media visionary who has been associated with Punjabi entertainment and media for nearly 17 years. Ms. Shinde has held high-profile posts with the best Punjabi channels aired in India and across the world. Prestigious women with us today. We are honored to have you here, ma'am. Thank you so much for your presence. Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for her? I would now request Mr. Sanjay Anand from Hammer to come up here on stage and felicitate Miss Raji M. Shinde with the KitchenAid gift hamper. So the first award was for the best mini pastry finger ring. And it goes to, any guesses? It goes to Eureka! Come on everyone, please. I was expecting that loud applause. Her certificate and gift hamper from Soft Sensation. The next is the best sugar display. All right, तो भाई जिनके नाम में ही रुमानियत है, Chef Rumana here on the stage for the best sugar display. To hand over her certificate and gift hamper from Soft Sensation. The next category is for the best dessert based on tart. And the award goes to, yes, none other than Chef Eureka. Come on everyone, please put your hands together. Congratulations, and I would request. And last but not the least, our last category is Best Dessert in a Glass. Any guesses for the best dessert in glass? We have a combined winner for this. Yes, we have Chef Rumana and Chef Eureka one more time. Eureka, it's been a hat trick for you. Share that on the stage so that we know it's a combined thing. Thank you so much. Thank you, ma'am, for joining us here on the stage and giving away our gift hampers and certificates to our winners. All right, thank you so much. And now I would request Mr. Rajneesh Sharma from Hammer team to come up here on the stage and felicitate Mr. Sanjay Tandon with the KitchenAid gift. Thank you so much, sir, for your support always. Without his support, we couldn't have been here. Mr. Sanjay Tandon, the president at the 7th year format. Sir, we would request you to say a few words. So welcome all. Thank you very much for coming here. I thank Hammer Publications. I thank the Academy of Pastry Arts for giving their venue for this event for the third time, and their support, their people.
I thank all of you to come, that you have come to grace this event. Thank you very much and welcome. And I hope you're enjoying the evening. Thank you. Thank you so much, sir. Moving on, I would now request our contestants and jury members to join us here on the stage, one more time. Okay, so I would request Chef Avijit Ghosh to come forward and give the participation certificate to Chef Reema Datta Gupta. Please put your hands together. Next we have Chef Manisha Basin. And ma'am, we would request you to give away the participation certificate to Chef Rumana Jasil. Please put your hands together. I would request Chef Gordon to please come forward and give away participation certificate to Chef Eureka. Thank you. I would request Chef Parvinder Singh Bali to please come forward and give away the participation certificate to Chef Ria Arora. Punjabi is on the stage. Thank you so much. So now all our participants have got their participant trophies, and it's time to let you all know that who is the winner for Pastry Queen India 2017. Any more guesses? All right, so I would request Ms. Taran to please come forward and hand over the name of the winner to Mr. Sanjay Tandon. And he would come up here and announce the winner for us. Come on everyone, make some noise! You know, I feel we must all, first of all, congratulate all the participants, because I feel it's very, very tough to stand for 2 days, not eat, clock the time, be sure that your weight is right, be sure that your final dish is placed well in front of the judges. It's a very, very difficult job. Let's all clap for that first. And now, the winner, it goes to Eureka Academy of Pastry Arts. So everyone, the Pastry Queen India 2017, Chef Eureka! From Pastry Academy Arts of India, Gurgaon. She's the queen, the Pastry Queen India 2017, Eureka. And I would request all our contestants to join us for this group picture.